हेलो एवरीवन, आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में अप्लाई करता है, जिसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हुई है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका ऑब्जेक्ट एंड द पर्पस ऑफ आर्टिकल 44 इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी के आने से होगा क्या? यूसीसी के आने से ये पर्सनल लॉज को रिप्लेस कर दें। जो पर्सनल लॉज बेस्ड है कस्टम्स पे, वो उन डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों के जो अपने पर्सनल लॉज है उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा और सभी को, एवरी सिटीजन बी गवर्न बाय कॉमन सेट ऑफ लॉज। दैट इज अबाउट द यूसीसी, जो उसका मेन ऑब्जेक्ट है, to bring the UCC in India. It is based on the concept no relation between religion and law. Religion and law में कोई भी relation नहीं होता। इस concept के ऊपर ये based है और modern civilization, the coming era that is in great need of such laws. The areas that covers by the UCC Uniform Civil Code is marriage, divorce, maintenance, adoption and succession of the property. ये सभी लॉज जो कि पर्सनल लॉज गवर्न कर रहे हैं राइट नाउ, इन सबको ये एक ही कोड, हम कहेंगे एक ही कोड एप्लीकेबल होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं पर्सन। इससे आफ्टर द यूनिफॉर्म सिविल कोड इट वुड नॉट अफेक्ट एट ऑल। द ओनली थिंग दैट इज टू बी कंसिडर्ड while deciding any case, anything regarding marriage, divorce, maintenance, सभी पे एक ही कानून एप्लीकेबल होगा। These are the areas which are covers. सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट का क्लियर सा, सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं ये अपील की है टू द स्टेट टू मेक ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट इट इज इन द एट द टाइम जब शाहबानो केस आया था, जिसमें कि वो मेंटेनेंस सीख कर रही थी अंडर सेक्शन 125 के सीआरपीसी में। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी टू द गवर्नमेंट कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। नाउ द टाइम्स हैज कम टू मेक ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, बट देन आल्सो द स्टेट ड्यू टू सम पॉलिटिकल और सोशल रीजंस अभी तक वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया है। यूसीसी जो गोवा एंड पौंडीचेरी, इसमें बहुत पहले से ही ये यूसीसी इन्होंने अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिसमें कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन्स वहाँ पे सभी पे एक ही कोड एप्लीकेबल होता है। इवन वहाँ पे कोई प्रोविजन भी नहीं है ट्रिपल तलाक का, और जो मुस्लिम मैन वहाँ पे मैरिज रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, दे कैन नॉट प्रैक्टिस पॉलीगैमी। सो इट्स नॉट, वी कैन से, ए न्यू थिंग दैट इज कमिंग इन आवर सोसाइटी। गोवा एंड पुडुचेरी इसको पहले से ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। So it's not big deal if some states move forward for the concept, make a common code, common law for all the persons irrespective of their religion. Recently उत्तराखंड ने एक इनिशिएशन लिया है और UCC 2024 बिल टेबल किया है और
इन द उत्तराखंड असेंबली, और इस वजह से आजकल ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग हो रखा है, आर्टिकल 44, एंड एवरीवन इज डिस्कसिंग अबाउट दिस आर्टिकल 44. बट व्हाट आर द चैलेंजेस that comes or the significance of it, challenges that be faced by the state or the people? That's it. Violation of fundamental rights. This is one of the main consideration of the state, that जहाँ पे भी religions की populations as a percentage we can say vary करती है, हिंदू और मुस्लिम्स जहाँ पे है, उनके religions फंडामेंटल राइट जो वायलेट होगा वो सबसे ज़्यादा कंसिडरेबल पॉइंट होगा, बिकॉज हिंदू अपने तरीके से मैरिज करते हैं, वेयर इज इन मुस्लिम्स दे आर डिफरेंट वे ऑफ मैरिजिंग एंड द डिवोर्स आल्सो. हाँ, उस टाइम पे ये वाला जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेटिव होगा. देन कल्चरल डाइवर्सिटी, जिसके लिए इंडिया जाना जाता है, उस पे थ्रेट. इम्पोजिशन ऑफ हिंदूज कोड, we can say Hindus code because यहाँ पे हम किसी एक नॉर्मल वे ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स की बात करेंगे जो कि मेनली हिंदूज में होता है, इसलिए इसको हिंदूज कोड के बाद कह सकते हैं हम कि मुस्लिम्स पे, ट्राइबल्स पे ये एक तरीके से इम्पोजिशन होगा कि वो अपने कस्टम्स को साइडलाइन करके दे हैव टू फॉलो ए कॉमन कोड, ए कॉमन लॉ in the case of their civil subjects, marriage, divorce, succession. For placement of personal law in concurrent list, it is very well that Schedule 7 of the Constitution talks about this few subjects: state list, union list, and the concurrent list. The concurrent list is the part 3 of the Schedule 7, जिसमें कि दोनों ही स्टेट एंड द सेंटर को राइट पावर है, both are empowered to make a law, enact a law on the subjects given in the concurrent list. जो concurrent list में है ये सभी सिविल सब्जेक्ट्स कवर हैं: मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, ये सभी सब्जेक्ट्स कवर हैं कॉन्करेंट लिस्ट में. एंड नाउ वंस द पर्सनल लॉज कम, ये इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा. द मेन पॉइंट, द कंसिडरेशन पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है, supposedly there are personal laws that are enacted by the center and now the state is making an endeavor to bring a common code, like the Uttarakhand is initiating this step. तो वहाँ पे कंसिडरेबल पॉइंट ये आता है कि इफ एनी लॉ विच इज नॉट इन कंसोनेंस विद द सेंट्रल लॉ, देन विच वन विल प्रिवेल? डेफिनेटली द सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल. सो स्टिल देयर इज सम, we can say, confusion regarding this. First of all, the things that is required to be changed is the central law, and the center will bring a uniform civil code and in consonance of that state make law accordingly. Then it would be then it would make the laws applicable. Otherwise it would maybe live in the book, in the paper only. सिग्निफिकेंस क्या होगा, बट इससे इफेक्ट क्या होगा? इससे इक्वलिटी आएगी, दैट वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड, दैट ब्रिंग इक्वलिटी. Here, once the uniform civil code implemented and enforced in our country, then equality will definitely become. Gender justice, how it is gender. If the uniform civil code comes, then like in Muslim law, women have no rights in the property, in some kind of properties, whereas in the Hindus law, after the Hindu Succession Act amendment, now the daughter also have the rights, but she can't seek first the share in the property of the person. So in that view also equality will bring. Strengthening the national integrity. National integrity definitely will strengthen once the equality comes between the persons and the genders, we can say.
Once the equality is there, national integrity definitely gets strengthened. Simplification of legal matters. That, yes, it's very important. Now, there are some always questionable whether now still a case is pending before the Supreme Court where they have appointed amicus curiae regarding whether the 125 CRPC will be applicable to the women who is already divorced by the Muslim person. So this type of questions and the ambiguity will definitely get clear. These are the, we can say, strengthen of the Uniform Civil Code. Hope so you understand the concept of Uniform Civil Code and its significance and the challenges that comes in the way after the enactment of this act. Thank you so much for giving me your time and listening this knowledgeable video. Thanks. Thank you.